Hi, my name is Burhan Kunda and we welcome you at Food with Burhan YouTube channel. In today's episode, we will show you how to smoke a goat leg in Kamadojoe. First, my wife Sama will show you how to marinate, and then I will show you how to smoke it on the Kamadojoe grill. We most of time use Kamadojoe grill for barbecue and smoking purposes. And yes, if you like our video, then don't forget to subscribe our YouTube channel and click bell icon for future notification. I hope you will enjoy this video and thank you very much for watching this. So we're gonna begin our marination. What I have done here is I have taken these 9 Thai chili. They're Thai, I don't know why they call them Thai, but they're green chili peppers, green chilies. Then we have hara dhania, coriander, green cilantro, and then I have about 6-7 of the dried red chilies. I'm gonna cut up these 3 red onions in quarters, and then I'm gonna just chop them all together in the hand blender. So I've chopped the onions into quarters, and I'm gonna just add some green chilies. It's gonna blend into 2 times because it's a lot of chopping. So first we're gonna start with our first part. So I'm just gonna add some oil while I am blending so that it has a nice fatty texture to it, and here we go. Our onions are done. Onions with some green chilies. I'm just gonna add them to the bowl here. Okay, so now it's all colorful. I'm just gonna add a good generous amount of avocado oil for the fatty flavor to it. We'll add our coarsely ground coriander and cumin powder, a good 2 teaspoons, 2 to 3 teaspoons. Gonna mix that well. Paprika, the smoked paprika, a good heaping teaspoon or 2. And I'm gonna add a good amount of turmeric, 4 teaspoons first, and then I'm gonna see how it goes. 1, it's about a tablespoon or so of the lemon juice. The fat in the grooves. Stuffing in the goat. This is the good part. So just more you fit it in, stuff it in. Okay. So now we're gonna wrap this up, and tomorrow make sure do continue to watch it till the end, because tomorrow we're gonna put it on high heat on the Kamadojoe. We're gonna roast it, and then we're gonna smoke it. So make sure you watch till the end. If you are enjoying the recipe, please do like, share, and subscribe to our YouTube channel. We love it when you appreciate us, and that's your way of showing us that you like it. दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल गोट लेग, बिल्कुल तैयार है कमाडोजो में जाने के लिए। ये थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अपने ग्रेट्स को ऑयल कर रहे हैं। ओके, ग्रिल पैन
के ऊपर ऑयलिंग भी हो गई है, क्लीनिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब नाउ इट्स अबाउट टाइम टू पुट आवर गोट लेग। माशाल्लाह, स्टार्टिंग तो अच्छी है, आवाज़ अच्छा निकला है इसका। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोज। द होल आइडिया इज़ के इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स रखेंगे विदाउट फॉइल के। इसके बाद हम फॉइल के साथ रखेंगे। अराउंड 6 आवर की कुकिंग टाइम होगा। 300 फ़ारेनहाइट से 250 फ़ारेनहाइट पे इसको कुक करेंगे। इसके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करेंगे। इंटरनल टेम्परेचर 200 पे हम समझेंगे कि ये अंदर से पूरा कुक हो गया है। और इसको 6 आवर्स लगेंगे, 6 to 8 आवर्स। इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 AM हुए हैं यहाँ पर हमारे टाइम पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे तक हम इसको निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह फिर। दिस इज़ नाउ द फाइनल सेटअप। ऊपर गोड लेग है, गोड लेग के नीचे ड्रिप पैन है, ड्रिप पैन के नीचे स्लो रोलर है, इसके अंदर कोयल है और कोल है और कोल के अंदर वुड्स है। सो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 आवर हो चुके हैं। सो नाउ इट्स अबाउट टाइम टू सी हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग। और अब हम इसको इट्स लुक गुड। सो वी गोना जनरली पिक इट अप एंड देन पुट इनटू अ फॉइल एंड देन वी विल कुक इट फॉर अनदर 2-3 आवर्स। Okay, so we're gonna put some oil to keep it moist. So now putting back, close the lid and let's see. Now time has come. हम अपनी ग्रिल आई थिंक प्रॉपर्ली तैयार हो चुकी है। इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। Looks full. Look at this. Look at it. It's Oh, out of bone. tender, extremely tender. माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसको हम सर्व करेंगे खरसा राइस के साथ। दिस इज द फाइनल प्लेट और बिल्कुल ही गल चुकी है। इट्स बहुत ही टेंडर और हम खाएंगे इसको खरसा राइस के साथ। And that's it. So this is the end of our video and thank you for watching this video. And if you like our recipe, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you very much and have a nice day.